We'll wait few minutes and then we will start the session. This is the last morning session of the week. Just give me a second. I'm just setting up. I hope I'm clearly audible and visible. आप लोग chat में लिख सकते हैं if I'm clearly audible or visible. If I'm not clearly audible and visible. Crystal clear. Yes. Thanks. Thanks for the confirmation. So let's start the session. Let me add a speaker to the stage. Ma'am, I've sent you the request. You can join in now. Shivangi ma'am, I've sent you the stage request. You can just accept and join in. Yes. Good morning, ma'am. I hope I'm clearly audible. Yes. Crystal clear. Very good morning, everyone. Let me know when we can begin. Sure. So I guess we can start now. Good morning, everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager at Motilal Oswal, and you see me daily with different experts and different sessions here. हम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज करते हैं so that it's easy for people to understand. Important information हम पिन करते हैं so you can check it out there. जो मॉर्निंग सेशन है for the people joining for the first time, so I would like to explain. जो मॉर्निंग सेशन है हमारा that focuses around cash, equity and stocks basically. So you can ask your questions whenever you're asking. Please share more detail कि ये stock आपने इतने price पे इतनी quantity में लिया, so we can answer it in more detailed way. And the afternoon session focuses around expiry derivatives trade. So आज हमारी census expiry है. Madhu sir will be joining to take that. And in morning we have our Nifty Queen Shivangi Sharda ma'am. So Shivangi ma'am will be taking the morning session. You can start dropping your queries after the market update and the sectors update. We will be happy to take it up. So handing it over to you, ma'am. You can share your screen and start. All right. Thank you so much, Anuj, for such a warm welcome. I'll just quickly share my screen. Yeah. So, guys, yesterday's expiry we saw, which was quite a dull one. But that is what is happening from the last two sessions. Nifty is witnessing wild swings on either side, so we need to be very watchful. Today is, of course, the last day of the week. And by the way, guys, comment करके ये भी बताओ कि आप बारिश को कैसे enjoy कर रहे हो. राइट, काफी बारिश है यहाँ पे बॉम्बे में. तो आप कहीं से भी जहां से भी जुड़े हो, mention your city and mention how you're enjoying it. You are it's quite a heavy rainfall here right from the morning. But yeah, someone's writing tea and pakora time. Yes, of course. It's rain. It's a rainy day, and people joining from everywhere. I'm seeing Kolkata, Jammu, Bangalore, Mumbai. Beautiful guys, Rajasthan. I think this is such a great platform where pan India we can connect and we can discuss about similar interests. Okay, someone's writing Bilaspur, Chhattisgarh, Mumbai. Okay, so Mumbai people, of course, it's very heavy downpour, and अगर आपको जरूरत ना पड़े तो आप घर से बाहर मत निकलना. Enjoy the markets, enjoy the rain, enjoy your tea, coffee. Okay, let's now start the session. So we've seen that the yesterday session, Nifty opened positive, and then there was profit booking. हम क्यों पिछले सेशन का बात करें ताकि हमें आज का स्टांस समझ में आए, पता चले. तो प्रॉफिट बुकिंग थी फर्स्ट टिक में ही, और उसके बाद जो है हमने देखा है कि लोअर जोन से जैसे ही निफ्टी ने 24,200 के आसपास टच किया, उसके वहां से एक काफी स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली, एंड रिकवरी वाज अराउंड 120 पॉइंट्स. सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट लोअर जोन्स पे काफी स्मार्ट बाइंग देखने को मिल रहा है, एंड ये आज नहीं, ये पिछले 2 हफ्तों से हो रहा है इन निफ्टी. सो
Support based buying is strong in the index, so there is no tension. You can go on doing buy on decline strategy if you are a positional trader. आप strategies भी उस हिसाब से place कर सकते हो for the next weekly expiry. And for the intraday also you can play out this. But of course, after just giving you a gist of the index, we will be discussing more of stocks because it's the morning session. But of course, it's important to understand कि broader market में क्या हो रहा है. Top down approach कोई भी study के लिए काफी important होता है. So now let's move on to Bank Nifty. What's happening here? Now, from the last 4 to 5 sessions, it's making lower highs, which indicates that follow up बिल्कुल नहीं है यहाँ पे बैंक निफ्टी में. पर आज के सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है. बैंक निफ्टी इज काइंड ऑफ आउट परफॉर्मिंग निफ्टी. तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये वॉच आउट करना पड़ेगा. कुछ बैंक्स जो है, अब आप हैवी वेट्स की अगर हम बात करें, कल जो हमने काफी बात की हैवी वेट्स की, तो आईसीआईसीआई बैंक को आप देख लीजिए, ये एकदम स्टेबल है हायर जोन्स पे एज कंपेयर टू दी अदर हैवी वेट बैंक. एचडीएफसी बैंक काफी हमने देखा कि 5-6 सेशंस में प्रॉफिट बुकिंग था. But ICICI Bank has not seen that kind of profit booking. It is stable and higher zones पे ही consolidate किया है. यहाँ पे कोई हमें weakness वाली बात नहीं दिखी. So ये clearly indicate कर रहा है that of course one such stock could have weakness, but the other stocks are not going to get affected by it very easily. ये सेम चीज हमने आईटी में भी देखा. अगर हम टीसीएस इन्फोसिस का चार्ट देखें, टीसीएस रिजल्ट्स वर आउट yesterday after the market hours. So उसका रिएक्शन जो है वो आज देखने को मिल रहा है. And TCS results were quite positive, and the stock is up by 2.5%. But interestingly, if we look at Infosys, यहाँ पे stock जो है, of course it was up, but there is some sort of consolidation. So heavyweights are performing irrespective. They are performing as per their, data, and इन्फोसिस अपनी तरह परफॉर्म कर रहा है, टीसीएस अपनी तरह परफॉर्म कर रहा है. एक सेक्टर में होते हुए भी जहां एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग है, बट आईसीआईसीआई बैंक जो है वो स्ट्रांगली खड़ा था. सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स गाइस कि हमें स्ट्रेंथ के साथ बने रहना है. whichever stock is showing strength in that index, we have to be with those kind of stocks. Now, you must have seen the similar kind of trend in auto, especially two-wheeler space. So these are the stocks, which are on the limelight. Infosys, see, it's another up by around 2%. So यहाँ पे हम similar structure देख रहे हैं. In fact, if we are talking about IT space, there is one stock Dixon, which is also consolidating. और जहाँ ये पूरे सारे stocks में strength बनते हुए दिखेगा, this is one stock which is also going to run up. So this is also to be kept on radar, but this is for next week, not for today. For today, we can focus on Infosys and TCS. So these are the space. Also, oil and gas is looking quite good. आप ONGC देख लो, यहाँ पे भी एक अच्छा follow up buying देखने को मिला. यहाँ पे stock एक breakout के बाद, follow up के बाद consolidate किया है, उसके बाद जो है follow up strongly दिख रहा है. So clearly strength is visible here as well. So we can look at ONGC. And let's talk about a few more sectors. But before I begin, Anuj, I'll just take this opportunity, this platform, to tell you that Motilal Oswal और हमारे नाम से काफी fake WhatsApp groups और websites और apps बन रहे हैं. Guys, please don't fall for any of its claims. We will never ask you money on WhatsApp. We never do that. And आप किसी से मिल के भरोसे से ही आप transfer your money, but don't transfer it any without knowing the authenticity. So don't fall for any of these trap, guys. This is for your benefit, for your investor interest only. So yeah, and just be safe, be alert. काफी cyber crimes होते हैं आजकल सब जगह पे. So just be very safe. This is a message for all of you, irrespective who are trading, not trading. Cyber crime से please आप बच के रहो. Authenticity देख के ही आप सामने वाले से बात करो या सामने वाले से monetary transaction करो. And be rest assured that we will never ask you for any money on WhatsApp.
So yeah, now let's begin. Let's get back to the session. So निफ्टी में लेवल्स की बात कर लेती हूँ. आज इंट्राडे के लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन डू बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी. अपसाइड वी आर लुकिंग एट 24,550 immediately or फिर 24,650, and one can look for 24,300 as a support for the day to play out this trade. Of course, it's Sensex expiry, so we need to discuss that as well. Similar to Nifty, we saw that yesterday after the profit booking in the first half, there was very smart recovery in the second half, and अब 80,000 के comfortably ऊपर trade कर रहा है Sensex. So we are looking for buy on decline over here as well. आप यहाँ पे bull call spread कर सकते हो to play out the move on the entire day. Sensex expiry is usually quite volatile, और options के prices को capture करने के लिए it's better that आप morning के first half of the day में आप option strategies के through play out कर लो. You can do a bull call spread because we are doing a bullish stance. We are having a bullish stance and we are doing buy on decline. So bull call spread can be done over here in Sensex. One can also look for capturing the movement. अगर आप काफी well versed हो option trading के साथ, तो आप option buying में भी capture कर सकते हो. But of course, we will be doing the hand holding in the afternoon session for the Hero Zero call as well. So you can be rest assured for that. Now, you can look for upside 80,500 levels immediately for Sensex, and 80,000 would be a make or break zone over here. आज भी हमने देखा कि 79,950 के आसपास वापस एक रिकवरी हुई. So 80,000 will tell you actually कि हाँ, इसके ऊपर जब तक टिकता है तो momentum on the upside will continue very smoothly. But अगर इसके नीचे ये breach होता है तो शायद range bound वैसे कुछ movement हम देख सकते हैं. ज्यादा मंदी लग नहीं रही है in both the index, be it Nifty, Bank Nifty or Sensex, so you can comfortably play the buy on decline stance. So Bank Nifty की अगर हम levels की बात करें, upside we're expecting 52,500 for the day, and of course there is outperformance here, so one can play this index also. But of course focus should be on Sensex क्योंकि आज Sensex की expiry है. बट लेवल्स यहाँ पे सपोर्ट के लिए हम 52,150 के लेवल्स हम देख सकते हैं. So these are the levels for the indices. I think I hope I covered everything. और ये levels आपको पूरे दिन ट्रेड करने में काफी हेल्प ही करेगा. So this is what is the stance for the day, and you can use these levels. Now we discussed a few sectors which are looking quite positive. One sector is where I want to bring focus is the consumption space, FMCG space. यहाँ पे एक बहुत अच्छा movement दिखा है. Today some stocks like Marico and all are down, but overall काफी अच्छा है. But clearly today focus of the day will be IT stocks. आप चाहे Bsoft देख लो, चाहे आप TCS देख लो, चाहे Infosys देख लो, these stocks are looking quite positive और आप उसमें play out कर सकते हो. In fact, Wipro and Coforge are also looking nice. तो आपके पास अगर ये है तो आप hold कर सकते हो. These stocks will be the drivers. Coforge जब negation हो रहा है इसमें तो यहाँ पे movement wild नहीं दिखेगा, but बाकी stocks जो है उसमें अच्छे movement हमें दिख जाएंगे. So these are the stocks you can play out in the IT space. और हमें guys हमेशा you have to be with the winners, okay? So in the sector, whichever stocks are moving and which are showing strength, you have to be with those. अब जैसे पूरे consumption space में ITC is one stock which is looking quite positive. I think we discussed multiple times in our platform as well. ITC from the last 5-6 sessions, there's been amazing buying. और ये जो rejection zone था यहाँ पे, you can see this zone over here. ये बार बार यहाँ पे surpass नहीं कर पा रहा था stock, and now there is fantastic follow up buying over here. So this is one stock which is looking quite positive और sustain करेगा higher zones पे जिस हिसाब से volumes यहाँ add हो रहे हैं. So ITC is one you can look out for. For those of you who are asking कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से sectors को हमें play out करना है या कौन से stance लेना है early in the morning, I'll just take 5 minutes to do this and then we'll discuss the stocks. So there is this Research 360 website. I hope you can see my screen. No, Shwangi ma'am, we can see the ITC chart. No. Okay, I'll just share it again.
So basically, okay, I've just shared the screen again. I hope you can see it now. Yes, now we can see. Yeah, perfect. So, बहुत लोग पूछते हैं कि early in the morning, what stance do we pick or which sectors do we pick? ये काफी लोगों का question रहता है. So, one capsule I'm giving you, and आप ये secret है, आप लोग किसी को बताना मत. Okay, so this is the Research 360 website. You can go and look at the market sentiments over here. अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या इंट्रा डे करना चाहते हो, उस हिसाब से आपको सेंटिमेंट्स देखना है. सो दीज आर बेसिकली द कंसेंसस ऑफ द सेंटिमेंट्स, और ये काफी एल्गो से हम कैलकुलेट कराते हैं. सो लॉन्ग टर्म आप ये समझ सकते हो, न्यूट्रल को आप हायर पे जोड़ सकते हो. सपोज इफ द बुलिश इज हायर, देन यू कैन ऐड दिस टू दिस. If the bearish is higher, then you can add the neutral percentage to this. So you'll get a fair bit of idea. Because neutral क्या होता है? Neutral range bound होता है. But range bound में भी एक stance होता है कि वो upside रहेगा या नीचे range bound रहेगा. तो वो आप जो सबसे बड़ा percentage है उसमें add कर सकते हो to get a fair bit of idea. So long term हम comfortable है कि 80% bullish है, right? So you can do buy on dips comfortably in a positional basis. Short term की देखते हैं. Short term also we are seeing that 85% is bullish. So short term also we can comfortably do bull call strategies for the expiry which is coming, and हम overnight हम देख सकते हैं कि comfortably हम positions carry कर सकते हैं. Okay, intraday में हम देखते हैं अब क्या हो रहा है. Intraday is largely saying range bound, बट थोड़ा बहुत बुलिश के स्टांस में रहेगा, बुलिश के आप सोच सकते हो टिल्ट में रहेगा. सो इंट्राडे वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच ऑफ अ अपसाइड मूव, थोड़ा रेंज बाउंड रहने वाला है. बट लुकिंग एट द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये श्योर है कि यहाँ पे बेरिश ट्रेंड नहीं है, बुलिश ही प्ले आउट करना है. So this is one sentiment tracker that can help you to understand कि क्या कैसे कौन सा stance लेना है. Again, this I had shown you yesterday as well. I'll show it to you again. यहाँ पे एक sector analysis मिल जाता है हमें. So the sectors which are performing the most, आपको सब यहाँ दिख जाएगा. So clearly, look at this guy, software and services. That is the IT space. वो आज का performer है जो कि number 1 पे खड़ा है यहाँ पे. So clearly, we have to pick stocks from these sector, which will actually help you, do the sector screening or the stock screening quite easily. अब आप अगर 200 F&O stocks है और भी ज्यादा cash के stocks है, आप सब नहीं कैसे check करोगे charts and everything. So this is one platform, this is one space where you can just see, and फिर आप उस sector में जाके stocks को देख सकते हो कि वो 10-12 स्टॉक्स में से आपको कौन से चुनने हैं और कौन से ट्रेड करने हैं. सो दिस विल गाइस हेल्प यू अ लॉट, एंड दिस इज लाइक अ गेम चेंजर. So please do track this on a daily basis. Now coming back, ITC is looking quite positive. Okay. So ITC is one stock which you can look out for 500k targets के लिए. So this is one stock that we can do intraday swings also. 500 का आप यहाँ पे समझ लो टारगेट रहेगा अपना, और 445 का एक स्टॉप लॉस रहेगा. So you can mark this stock for a intraday swing and play. So this is looking quite positive. Okay. Now we've discussed a lot of sectors, lot of stocks, indices के levels भी हमने discuss कर लिए. Anuj, I'll just quickly take up a few questions now, because I'm seeing like a lot of questions. किसी ने लिखा है, ma'am, this is ninja technique. Yes, yes, it is, and I'm sharing it with you all. तो इसलिए मैंने बोला कि secret है, आप बताना मत किसी को. Ma'am, it will be great if we can update about, we can share the update about the BTSC जो हमने कल दिए थे तो. Yes. Okay, so someone's asking about BHEL. So BHEL is looking quite positive, and range bound movement अभी दिख रहा है. But there is no problem in the stock. Entire space is looking quite positive. So
one can keep holding this stock. Okay. So next is NBCC Tata Steel. Okay, entire steel space is quite positive. If you look at JSW Steel also, Tata Steel also, थोड़ा बहुत profit booking है, but long term structure अभी भी intact है इसका. So this can be your investment pick, but definitely not a trading stock. So you can, if you're a long term investor, you can be in the stock, but not for short term. Okay. Bhel, okay, someone's asking, is my trip, I guess I remember we had discussed last time also. और मैंने आपको यही advice दी थी कि आप exit कर लेना because momentum नहीं है यहाँ पे, which still stands as the stance for the stock. चंबल की बात कर लेते हैं हम यहाँ. चंबल देखो डेली फ्रेम में तो कंसोलिडेट कर रहा है काफी दिन से, पर यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, सपोर्ट बाइंग है. एंड ये जो कैंडल्स के लो को हम देख रहे हैं वो अभी तक टूटा नहीं है. सो ओवरऑल देयर इज गोइंग टू बी अ गुड पॉजिटिव टू रेंज बाउंड स्टांस. यहाँ पे वैसा वाला मोमेंटम तो नहीं नजर आ रहा है कि स्टॉक उड़ जाएगा, बट ऑफ कोर्स इट विल रिमेन रेंज बाउंड टू पॉजिटिव. सो this is the stance. Okay. Someone's asking about Bsoft. Yes, Bsoft हमने अभी just discuss किया सुबह. It's looking quite positive because सारे ही IT stocks जो है वो momentum में है काफी. पर आज focus heavy weights पे है. So one can look out for TCS, Infosys, Wipro. आप ये stocks देखो, इसमें ज्यादा momentum है and one can capture this trade. सो इन्फोसिस या टीसीएस में आप ट्राई करो कि आप आईटी स्टॉक में कैप्चर करो. ऑफ कोर्स मिड कैप आईटी इज आल्सो स्ट्रांग, बट यहाँ पे फोकस आज ज्यादा हेवी वेट्स का है. ओके, समवन आस्किंग बीईएल. बीईएल रेंज बाउंड है. अगर आप इन्वेस्टर हो थोड़ा पेशेंस टेस्ट हो सकता है, बट बने रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीयूष इज आस्किंग अबाउट इल्डा. So IRDA is one stock which has rallied and very good follow-up action is also seen over here. So of course पिछले 2 दिन में ही हमने देखा है कि stock has moved by around 30%. So a good rally has been seen over here. बट काफी स्ट्रॉन्ग फॉलो अप है क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ पे काफी है. उसके अर्निंग्स भी आज एक्सपेक्टेड है. सो हम होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग की मैं नहीं एडवाइस करूंगी. होल्ड कर रहे हैं अगर अगर समवन्स बॉट इट एट लोअर लेवल्स, तो आप अपना स्टॉप लॉस आगे ट्रेल करते रहो ताकि आप कैपिटल अपना प्रिजर्व करो. So, this is one superb space which looks quite positive, but keep your risk also in hand. Okay, power space is also quite positive. Power grid जो है कल के सेशन में इसने एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया था, पर ओवरऑल okay, it's moving in a range bound manner. So we can expect some sort of more softness over here before the stock starts again for a good up move. हमने वोल्टास कल डिस्कस की थी. वोल्टास की वापस हम देखते हैं. स्टॉक इज अप बाय अराउंड a few points. So but also this is doing good and ऊपर है. आज थोड़ा बहुत हम expect कर सकते हैं कि इसमें range bound move आए because focus is on the other sectors. So one can exit above the cost levels अगर आपका लिया हुआ है. Okay. Someone's asking Titan. Okay, Chetan is asking Titan. वो भी देख लेते हैं. Titan has been on a downtrend from the last 3 weeks. यहाँ पे थोड़ी बहुत भी हम देखते हैं कि रिकवरी की कोशिश होती है, बट वो हो नहीं पाती है. फॉलो अप काफी कम है स्टॉक में. So I would advise to wait for a little more time to then again entry in this stock, right? Okay, someone's asking budget pick.
uh, one can look for Zomato, which is looking quite positive. Zomato एक ऐसा stock है जो for the next 2-3 weeks you can ride this stock for 250 targets और 200 के stop loss को आप ध्यान रख सकते हो. This is one pick which is quite positive for this entire month. और of course इतनी बारिश भी हो रही है तो आप जो है समोसे पकौड़े order करने वाले हो online. So these stocks are going to have like a good business now. Okay. Someone's asking GE shipping. Okay. Yeah, sorry, Anuj. You were saying something? No, actually, we were getting Electra again and again by a couple of them, so I thought if we can take Electra. Okay, I'll just discuss that. GE shipping पहले discuss कर लेते हैं किसने पूछा था. पूरा shipping space काफी positive है. Mascot Dock भी काफी positive है. तो GE shipping, Mascot, Cochin ये सब आप बने रह सकते हो. Investment के लिए तो बहुत ही अच्छे stocks हैं, but trading के लिए भी आप अच्छे swings निकाल सकते हो. So no tension in that. Olectra and M&M का भी काफी queries आ रहा है. Olectra is down a little on the weekly basis, लेकिन consolidate कर रहा है. Long-term chart is quite positive, so you can be in this for an investment purpose, but trading के लिए नहीं. अभी थोड़ा wait कर सकते हैं trading के लिए. Mahindra and Mahindra, I'll just take that up as well. Stock में थोड़ा बहुत recovery revival देखने को मिल रहा है, but 2700 would be a crucial make or break zone over here. तो आप इसको ध्यान रखो and then you can trade accordingly. But 2700 will decide the future of the stock for the next 2-3 sessions. RBNL. RBNL. पूरे railway space में IRCTC is the only stock which has not moved, but the other stocks have really done well. Also, IRCTC is the only F&O railway stock, but the other stocks are looking quite positive. इसका अगर हम weekly structure भी देखें, there has been a good strong bullish candle that we are closing the week to. So quite positive. Follow up can be seen over here. इस पूरे महीने में अभी तक महीने का 15 दिन भी नहीं हुआ है और हमने देखा है कि 50% स्टॉक जो है ऑलरेडी राइज कर चुका है. और गाइस आप ऐसा मत सोचना कि ऑलरेडी राइज हो चुका है तो अब और नहीं होगा. जिस स्टॉक में स्ट्रेंथ बनता है उसी में और स्ट्रेंथ फिर बनते हुए दिखता है. This is the nature of the market. Of course, sentiments आ जाते हैं, but while you're trading or while you're investment, you should keep your sentiments out of the system. That is how you can, do your risk management and actually make money in a very systematic way. Okay. India Limited. Sorry? Engineers India Limited. Okay. Engineers India Limited. हम देख लेते हैं ये स्टॉक. I'm not getting the script. Yeah. So daily basis, this stock is now holding at the higher zones. Good part is कि अपने previous high को निकाल पाया ये stock and काफी अच्छा इसमें हमने देखा है कि run up हुआ है. You can still hold this stock. There is space for a more 3 to 5% up move over here. I guess, ma'am, this would be the last query for the day. SBI cards. Okay. SBI cards. Okay. Let's look at this stock. थोड़ा बहुत consolidate कर रहा है. Weekly basis पे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा. क्योंकि ये stock जो है अभी फिलहाल शुरू ही नहीं किया है perform करना. These are one of those stocks which are trying to perform, but there is no good follow-up seen over here. So it's going to test some patience. Entry का नहीं मैं advise करूंगी अभी इन levels पे. थोड़ा और wait and watch कर लेते हैं. Then we can think of a fresh entry over here. Someone's asking Bank Nifty. हमने already view दे दिया है. The levels are also pinned, so you can just see that. Right? Okay. Now over to you, Anuj. So, ma'am, I guess we did take a lot of queries, a lot of sectors. हमने काफी कुछ cover कर लिया. In fact, जो queries आ रही थी हमने पहले ही cover कर लिया था वो. So thanks a lot for that. And I feel it's been a good session. We will come back again at 2:30 p.m. for our census expiry with our expert Madhur sir. So don't forget to join in and spread the word. Invite your friends and family and beware of the fake groups and fraudulent calls that you get from everywhere. We only have few official channels. आप जाके check कर सकते हैं. Motilal Oswal Limited verified tick on Telegram, on WhatsApp, on Meta.
entire Instagram, Facebook. So that will be all. Thanks a lot and see you at 2:30. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. See you, everyone. Have a